Hi guys, welcome back to the channel. And first of all, I think a a great win for RCB. It was a great performance overall from RCB. Especially the way uh, they batted yesterday. They actually batted out KKR की एकदम तहस कर दिया. बॉलिंग के जो स्ट्रैटेजीज थे अजिंक्य रहाणे ने प्लेस किए थे. एंड बहुत ही इनक्रेडिबल बैटिंग थी यहाँ आरसीबी के द्वारा कल. एंड इट वाज आई फेल्ट एक बहुत अच्छा टेम्पलेट सेट किया आरसीबी ने अपने लिए बैटिंग वाइज, विच इज़ आई थिंक कॉमन लास्ट 2 years से कि वी आर गोइंग टू बैट अराउंड विराट कोहली. सिंपल एज दैट. सो यही था टेम्पलेट लास्ट ईयर. बट आई थिंक पीपल फेल टू रिकग्नाइज विराट कोहली का यही काम है. ही नीड्स टू एंकर द इनिंग्स. ही नीड्स टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज अराउंड हिम इज बैटिंग वेल. We'll come to RCB batting later, but first of all, let's discuss the match, recap what happened. And as you know, the first thing that happened was of Kolkata Knight Riders batting very well in the beginning. Quinton de Kock short ball has been an issue for him, and वही तरीके से उनका आउट किया जाता है. But then all of a sudden एक we see a revamped Ajinkya Rahane, first in what we had seen in Chennai Super Kings, and he makes sure that KKR gets to a bullet start with Sunil Narine. Initially I felt okay. I think Ajinkya Rahane wanted to express himself, and he was taking down bowlers left, right. सुनील नारायण वॉज ऑल्सो देयर. सुनील नारायण को आई थिंक अब दूर बॉलिंग करता है. आई थिंक वो स्ट्रैटेजी होती है हर बार सुनील नारायण को आप स्टम्प्स पे ना डाले बिकॉज इज़ अ स्लॉगर. बट आई थिंक दिस इज़ हाउ सुनील नारायण लाइक्स इट. एंड दूर बॉल आ रही थी, उनको इतना टेस्ट मेरे हिसाब से किया नहीं गया था. बट ओके, आई थिंक सुनील नारायण दूर डालोगे आप, दैट वॉज द स्ट्रैटेजी. एंड ही गेट्स आउट एज वेल. आई थिंक दैट हैज़ बीन द की. बट Sunil Narine was ready. I think he was placing the ball very good. Elegance भी दिखा रहे थे. So I felt okay. I think that's not an issue for him. And yeah, this is how I think it was about the power play. It was a very good start. And somewhere around 10 overs or something, I think 100 for 1 हो गए थे. And then all of a sudden, of course I rate the bowler very high. Rafiq Salam, he gets there. बहुत अच्छी बॉल थी. बहुत शार्प एज लगता है. जितेश शर्मा का बढ़िया कैच होता है. एंड देन आई थिंक मोमेंटम स्टार्ट्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स आरसीबी. एंड देन दे स्टार्ट टू बिल्ड प्रेशर. एंड इट्स अबाउट टेकिंग एक विकेट लिया. एंड देन दे फेल्ट ओके. आई थिंक विकेट कंटिन्यूस लेते रहते हैं. एंड अजिंक्य रहाणे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट ही कुड हैव वेटेड फॉर वन मोर ओवर, बट ही डिडंट. ऑफ कोर्स ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज फ्लो. एंड देन he got out to Krunal Pandya, and Krunal Pandya was fantastic yesterday, and he made sure that no Kolkata batter gets easy runs when it comes to Rinku Singh, who wanted to be out there, who wanted to express himself, go out where Venkatesh Iyer किसी को सेट होने नहीं दिया, किसी की पार्टनरशिप लगने नहीं दी. एंड या कंटिन्यूस प्रेशर बनाते गए आरसीबी वाले बॉलर्स उन पे. रन इजी बन नहीं रहे थे, मतलब 4-6 लग नहीं रहे थे. एक दो से ही दे हैड टू कंपेंसेट देमसेल्व्स. एंड प्रेशर में उन्होंने 2 ओवर लिविंगस्टन से भी निकाल दिया, विच वॉज इनक्रेडिबल अगेन. एंड सूर्य शर्मा ऑल्सो डिड वेरी वेल. आंद्रे रसल हैड गॉट अ 4 एंड देन ही गॉट आउट. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन. केकेआर को एक मैसेज मिल गया था कि I understand. I think projected score at one point of time was 230, but as soon as Sunil Narine got out, I think they could have just told themselves, okay boss, हम एक दो रुकते और फिर मारते हैं. But they looked in very rush, and Rinku Singh, Venkatesh Iyer, they could have just stayed more. I think 1-2 overs, एक दो, and it's about rotation. But yeah, Krunal, hats off to the captaincy. And hats off to that
स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिनेश कार्तिक आके कुछ बात करते रजत पाटीदार के साथ. So Rajat Patidar and Virat Kohli, I think it was great. How they placed the field, placed the bowlers at the right time. The overs nikalna, Livingston sir was incredible. And then yeah, I think मेरे हिसाब से I think so. Talking about the positives is Ajinkya Rahane performing well. I think it's too early again, but वो अच्छा कर रहा है. एंड आई थिंक कैप्टनसी पे भी उनको द कॉन्फिडेंस देगा बैटिंग परफॉर्मेंस. एंड अजिंक्य रहाणे डूइंग वेल. एंड आई थिंक सुनील नारायण ऑल्सो लुक्स इन गुड टच, लुक्स इन गुड नेक. आई थिंक रेस्ट ऑफ दैट, आई थिंक कोलकाता हैव टू I think first of all someone has to take up initiative in the middle order के okay boss, I will do the rotation, I will take it up. हिटिंग नहीं, मतलब रेकलेस हिटिंग नहीं करनी है. कल एक फील हुआ था कि भाई वो लोग प्रेशर में आके चोक हो रहे थे to Kunal Pandya's bowling, and I felt okay, they could have just nudged him for 1-2 something, rooted the strike. बहुत ही रश लग रहा था. Not taking away the fact that RCB bowlers were all over them. लास्ट ओवर में डेथ में भी जॉस हेजलवुड ने बहुत ग्रेट बॉलिंग की. आई थिंक दैट इज़ हिज क्लास. And it was an overall a very good RCB performance. And then batting, to I think everyone has seen that Phil Salt was attacking from all ends, and Virat Kohli bas last mein when Sunil Narine and Varun Chakravarti came in. Varun Chakravarti हुए काफ़ी पीटा वैसे, but Sunil Narine came in. It was all about nudging, एक दो रन निकाल के to rate the strike. यहाँ पे 4-6 मिले. एंड जब तक सुनील नारायण आए तब तक तो प्रेशर बहुत निकल गया था. एंड हर्षित राणा आई थिंक वॉज अ लिटिल हिट एंड मिस बाय अजिंक्य रहाणे, बिकॉज हर्षित राणा आई थिंक जैसे ही वो फर्स्ट बॉल उन्होंने डाली, आई थिंक सेकेंड बॉल ही ऑलमोस्ट गॉट आउट विराट कोहली. एंड ऑफ कोर्स पहले एक बाउंस लग गया एंड फिर इट केम टू हिम, बट आई थिंक दैट वाज हिज वे ऑफ बॉलिंग. वैभव अरोरा आई थिंक कुड हैव बीन स्टॉप्ड और ही कुड हैव बीन यूज्ड एज अ सेकंड बॉलर टू द न्यू बॉल. एंड हर्षित राणा विद द फर्स्ट बॉल, आई थिंक वही हम ट्वीक देखेंगे बॉलिंग साइड में. एंड आई थिंक दैट वाज अ हिट एंड मिस फ्रॉम अजिंक्य रहाणे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग टू से मच अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स, बिकॉज they were all ends पे bamboozled by RCB's bowling, and they didn't realize कि भाई विकेट्स गिरते जा रहे. someone has to hold one end, and वो किया ही नहीं वो लोग ने. so yeah, I think यही है लेके जो कि. and I think RCB looks very good team, and I think they have to continue this way to qualify for the playoffs, because this team looks good, balance है. 2-3 ओवर भी निकालने वाले भी बॉलर्स है जैसे लिविंगस्टन, can take up and can do bowl, leg spin and off spin both. So yeah, that's it. A great match, great win for RCB, and yeah, let's see what's next. Until then guys, take care and happy weekend.